Hello and welcome to our YouTube channel Angrezi Suno or Bolo. In this series, we are trying to understand English grammar in a more fun way and using real life conversations. In the previous video, we discussed about conditional sentences and their types. And out of these 5 types, we understood zero conditional in detail in the previous video. Zero conditional is used to talk about general truths and scientific facts. Alright, in this video, we are going to discuss first conditional. In this video, we'll break down first conditional in detail. So, let's get started. First conditional. First conditional is used to talk about possible future situations, the events which are likely to happen in the future. जब हम भविष्य में होने वाली किसी संभव घटना की बात कर रहे हों, ओके, भविष्य में होने वाली किसी संभव घटना की बात हो रही है. When we talk about possible future events, remember this thing. In the first conditional, we talk about possible future events. Let's see some examples. अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा. अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा. If it rains, I will take an umbrella. If it rains, I will take an umbrella. अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगे तो तुम परीक्षा पास करोगे. If you study well, you will pass the exam. अगर वह मुझे कॉल करेगी तो मैं फ़ोन उठाऊंगा. If she calls me, I will answer the phone. I'm sure you must have used such sentences at some point, right? In English, these sentences are called first conditional sentences. Now, let's look at the structure of first conditional sentences. As we know, the conditional sentences have two parts, the if clause and the main clause. In the case of first conditional sentences, the if clause will remain in present simple tense and the main clause will have this will keyword and the base form of verb. As we already discussed, if वाले भाग में present simple और परिणाम वाले भाग में will plus verb रहता है. The if clause is in the present simple and the result clause is in will plus verb format. Is that clear? Let's go ahead. वाक्य को उल्टा भी लिखा जा सकता है. The sentence can also be reversed. Like this, मैं छाता ले जाऊंगा अगर बारिश होगी. इसके पहले था अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा. अभी है मैं छाता ले जाऊंगा अगर बारिश होगी. I will take an umbrella if it rains. पहले जो था वो कुछ इस तरह से था, if it rains I will take an umbrella. If it rains I will take an umbrella. It means you can reverse the order of the sentence but the meaning will remain the same. You can reverse the order of the sentence but the meaning will remain the same. I hope it's clear and you are getting it. Let's move ahead. Let's see a real life conversation to understand conditional sentences in a better way. The scene is something like this. राहुल और अमित कॉलेज के बाद पार्क में टहल रहे हैं और पढ़ाई, मौसम और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं. Rahul and Amit are walking in the park after college. Rahul and Amit are walking in the park after college discussing studies, weather and future plans. Let's see the conversation. Rahul says, यार आज मौसम बहुत अजीब है. Man, the weather is so strange today. आज मौसम बहुत अजीब है. The weather is so strange today. कभी धूप कभी बादल. Sometimes sunny, sometimes cloudy. हाँ, अगर बादल छा जाते हैं
तो ठंडक हो जाती है. यस, इफ़ द क्लाउड्स कवर द स्काई इट गेट्स कूलर. इफ़ द क्लाउड्स कवर द स्काई इट गेट्स कूलर. So you can see this is an example of zero conditional sentences. If the clouds cover the sky, it gets cooler. सही कहा, ट्रू. लेकिन अगर बारिश हुई तो हमें भीगना पड़ेगा. If it rains, we will get wet. If it rains, we will get wet. So this is an example of first conditional sentences. अच्छा सुन, बाय द वे, कल मैथ्स का टेस्ट है, तूने पढ़ाई की? टुमारो इज़ द मैथ टेस्ट, हैव यू स्टडीड? अच्छा सुन, कल मैथ्स का टेस्ट है, तूने पढ़ाई की? बाय द वे, टुमारो इज़ द मैथ टेस्ट, हैव यू स्टडीड? थोड़ी बहुत की है पर अभी भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं. थोड़ी बहुत की है पर अभी भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं. I have studied a little, but some topics are still left. I have studied a little, but some topics are still left. अगर हम आज रात अच्छे से पढ़ाई करें तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे. अगर आज रात हम अच्छे से पढ़ाई करें तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे. क्या लगता है आपको? What do you think? किस तरह का सेंटेंस है ये? ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल? Can you guess? If we study well tonight, if we study well tonight, we will get good marks. We will get good marks. So it's an example of first conditional sentences. It is telling future possibility. बिल्कुल सही. वैसे अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता तो इतनी टेंशन नहीं होती. अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता तो इतनी टेंशन नहीं होती. What do you think? Which type of conditional sentence is this? Absolutely right. Actually, if I studied a little every day, if I studied a little every day, I wouldn't be so stressed now. I wouldn't be so stressed now. So this is an example of second conditional. Second conditional sentences are used to talk about hypothetical, present और future situation. इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती है, सब कुछ इमेजिनरी होगा. जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता तो इतनी टेंशन नहीं होती. सब कुछ इमेजिनेशन है, ना ऐसा कुछ हुआ है ना कुछ होगा. So this is an example of second conditional, and second conditional sentences are used to talk about hypothetical present or future situation. Example, you can see, if I studied a little every day. If I studied a little every day, अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता तो इतनी टेंशन नहीं होती. I wouldn't be so stressed now. हाँ, यही तो होता है. Yes, that's what happens. अगर तुम तैयारी नहीं करते तो आखिरी वक्त पर टेंशन होती है. इफ़ यू डोंट प्रिपेयर यू गेट स्ट्रेस्ड एट द लास्ट मोमेंट. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो कंडीशनल. इफ़ यू डोंट प्रिपेयर यू गेट स्ट्रेस्ड एट द लास्ट मोमेंट. अब पछताने से अच्छा है कि हम अभी पढ़ाई शुरू करें. बेटर देन रिग्रेटिंग वी शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ. बेटर देन रिग्रेटिंग वी शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ. सही कहा, चल लाइब्रेरी चलते हैं. राइट, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी. अगर हम वहाँ पढ़ें तो हमें अच्छा फोकस मिलेगा. इफ़ वी स्टडी देयर, इफ़ वी स्टडी देयर वी विल be able to focus better. So here you can see will keyword has been used, and we all know will keyword or will helping verb will be used in first conditional. So this is an example of first conditional sentences. If we study there we will be able to focus better. हाँ, और
अगर हमें कोई सवाल समझ में नहीं आता तो हम सर से पूछ सकते हैं. Yes, and if we don't understand any question, we can ask the teacher. If we don't understand any question, we can ask the teacher. This is an example of zero conditional sentence. चल फिर देर मत कर, अगर हम जल्दी निकलते हैं तो हमें अच्छी सीट मिल जाएगी. अगर हम जल्दी निकलते हैं तो हमें अच्छी सीट मिल जाएगी. यहाँ पर नियर फ्यूचर की बात हो रही है. Let's go then, don't delay. If we leave early, we will get a good seat. Again, this is an example of first conditional sentence. चलो चलते हैं. Let's go. Alright, that's it for this video. In this video, we discussed the first conditional, looked at examples, and saw a real life conversation to understand it better. I hope you enjoyed this real life conversation and that it helped you to understand conditional sentences more clearly. If you have any suggestion, advice, or feedback, please let us know in the comment section. Your feedback helps us improve our future videos. Alright then, see you in the next video. Till then, stay happy, keep learning, and don't hesitate to make mistakes while speaking English, because that's how we all grow. Thank you.